अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मोहसिन। आज मैं आपके लिए यूनिक कंसेप्ट ऑफ प्रपोजिशन का एक नया कंसेप्ट जिससे आपको प्रपोजिशन याद करने में और उसको समझने में कभी मुश्किल नहीं होगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंग्लिश विद मोहसिन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजिशन है क्या। प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड और प्रोनाउन। वो नाउन में या प्रोनाउन में एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक जाहिर करता है एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और जो दूसरे अल्फाज होते हैं उनके साथ भी, जो फिक्रे में दूसरे अल्फाज होते हैं उनके साथ भी वो रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इट इंडिकेट्स लोकेशन, ये लोकेशन को, डायरेक्शन, सेंट को, टाइम वक्त को, मैनर, अखलाक क्या है आपकी, कितनी आपको तमीज है, और अदर रिलेशनशिप्स बिटवीन द वर्ड्स। और ये दूसरे अल्फाज में, जुमले में जितने भी होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनके में ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं, उनमें रिलेशनशिप बताता है कि ये है। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स ऑफ लोकेशन कौन से हैं। इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, अबव, बिसाइड। नंबर सेकंड है वर्ड्स ऑफ डायरेक्शन कौन से, टू, फ्रॉम, अप, डाउन, इन, आउट, थ्रू, अक्रॉस। नंबर थर्ड हमारे पास है वर्ड्स ऑफ टाइम कौन से, एट, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल। वर्ड्स ऑफ मैनर, बाय, विद, इन, लाइक। वर्ड अदर रिलेशनशिप कौन से, ऑफ, फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, डिस्पाइट, डिस्पाइट। तो ही वॉज एडिक्टेड, खा लीजिएगा, स्मोकिंग। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ही वॉज एडिक्टेड, खा लीजिएगा, ऑफ, टू, ऑन, बाय। तो ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू, इट इज इजी टू accustom oneself to bad habits, with, of, to, in, to bad habits। नंबर थर्ड है यू शुड अवॉइड योर प्रोमिसेस, यू शुड, विद, ऑफ, बाय, टू। इसका आंसर है बाय। नंबर फोर है हमारे पास, ही वॉज नॉट एबसेंट, खा लीजिएगा, स्कूल, एबसेंट फ्रॉम, एबसेंट फ्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास है माई फ्रेंड एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, विद, ऑफ, टू, इन, एक्सीडेड टू, एक्सीड टू। नेक्स्ट है आई डोंट एग्री, खा लीजिएगा, योर सजेशन, एट, ऑफ, बाय, टू। आई डोंट एग्री टू योर सजेशन। हिज हाउस इज एडजेसेंट to the mosque, adjacent to। He aimed at the bird and fired, aimed at, aim at होता है निशाना बांधना, ताक लगाना। He was absorbed in his studies, absorbed in। He was accused of theft, absorbed in, accused of। Junaid was annoyed my performances, annoyed at। He alighted, the horse, he alighted from the horse। Next time the judge has acquitted him of the charge, acquit, रिहा कर देना, बरी कर देना। all are answerable to God। Next हमारे पास है he was not aware the, खाली जगह, the situation, he was not aware of, बखबर होना। I availed myself of the chance, I availed myself of the chance, I availed myself of the chance। ये हमारे पास आ गया ऑफ, ये हमारे पास आ गया ऑफ, ये हमारे पास आ गया आंसरेबल टू, ये हमारे पास आ गया क्विटेड ऑफ, रिहा करना, बरी करना। यू शुड अटेंड, खाली जगह, योर वर्क। इस सवाल का जवाब आप मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। चार आपके पास ऑप्शन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद मोहसिन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।